Hello children and welcome to today's session. We all know कि हमें तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर टाइम. Human beings cannot live without these three things. सोच के देखो कौन सी हैं ये तीन चीज़ें. Food, clothing and shelter. खाने की बात तो हमने पिछले चैप्टर में करी थी. इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे हाउसेस की और हमारे क्लोथ्स की. This is the chapter on housing and clothing. House क्यों चाहिए होते हैं? House इसलिए चाहिए होते हैं to protect us from very strong heat, very strong cold, strong winds and from rain. We also need houses to protect ourselves from stray animals like dogs. We also need houses ताकि जो हमारा सारा सामान होता है वो सेफली एक जगह पे पड़ा रहे. Thieves and robbers उसको चुरा के ना ले जाएं. So these are the reasons we need houses. Early man जो सबसे पहले रहता था वो कहाँ रहता था? वो रहता था ट्रीज़ के ऊपर, केव्स के अंदर. जब उसको ये समझ में आया कि ट्रीज़ और केव्स के अंदर वो फुली प्रोटेक्टेड नहीं है तो उसने घर बनाने शुरू करे. The first houses that were made were called temporary houses या कच्चा house. These houses were made of things like leaves, wood, mud. बहुत तेज़ बारिश या बहुत तेज़ आंधी की वजह से temporary houses या कच्चा houses गिर जाते थे. That is why over a period of time man started making permanent houses. Permanent houses किससे बनते हैं? सीमेंट से, wood से और bricks से. These permanent houses can be like a bungalow or they can be like tall buildings with many houses in between. So the two types of houses that we have learned are permanent houses and temporary houses. अगर हम बहुत ठंडी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत सारी स्नो होती है वहाँ पे हमारा हाउस डिफरेंट होगा compared to our house in cities like Delhi and Jaipur. बहुत ठंडी जगह में आइस के हाउसेस बनते हैं. These houses are known as igloo. और जहाँ बहुत सारी स्नोफॉल होती है और जहाँ बहुत सारी रेनफॉल होती है वहाँ के हाउसेस की रूफ स्लांटिंग होती है so that snow and rain can slip off the roofs easily. These houses are called sloping roof houses. So this was all about the houses that stay in one place. अब अगर किसी को अपने घर के अंदर बैठे बैठे एक दूसरी जगह पे जाना हो तो वो क्या करेंगे? They use movable houses. Yes, houses that can be moved from one place to another. Houseboats in Srinagar and houseboats in Kerala are one example. ये boats होते हैं जिनके अंदर पूरे पूरे houses होते हैं. There is a kitchen, a bathroom, a drawing room, a bedroom, all on the boat. Similarly, there are houses called caravans. These are houses on wheels. These houses can be connected to a truck or a tempo and you can take them anywhere you want to. Having learnt about the different types of houses, let us learn about the third thing which human beings need, clothing, kapde. Why do we need to wear clothes? We need to wear clothes because clothes protect our body from germs. Clothes protect our body from sunlight, from cold and from rain. Also, smart कपड़े पहन के हम बहुत smart लगते हैं. That is why clothes make us look pretty and confident. Clothes vary according to the season. Summer season में जब बहुत गर्मी होती है तो हम पहनते हैं cotton clothes. Cotton clothes are lightweight clothes. इनसे हमें गर्मी नहीं लगती है. Cotton clothes absorb sweat very easily. गर्मी में जब हमें खूब पसीना आता है we need clothes that can absorb the sweat and help us to breathe and feel free. During winters when it is very cold, we need clothes that are very thick. Clothes like woolen sweaters, jackets etc. These keep us very warm. Woolen clothes कैसे बनते हैं? Woolen clothes बनते हैं fur से और fur कहाँ से मिलती है? Animal hair से जैसे कि sheep से, camel से.
रेनी सीजन के अंदर जब खूब बारिश हो रही होती है, वी नीड वाटर प्रूफ क्लोथ्स। वाटर प्रूफ का मतलब जो हमारी बॉडी पे पानी ना पड़ने दें। रेनकोट्स एंड गमबूट्स आर वाटर प्रूफ क्लोथ्स. So children, in this chapter we have learnt about the different kinds of houses. We have learnt about houses with different roofs. We have learnt about igloo. We have learnt about houses that can move from one place to another. We have also learned about clothes in this chapter. Clothes that we wear in summers, clothes that we wear in winters, and clothes that we wear in rainy season. Thank you.